नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आछन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे भूलें। पाखे थिबा बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आज गुरुत्वपूर्ण खबर होची जो कर्मचारी सर्विस बुक अच्छी सर्विस रेकर्ड जो मेंटेन करा जाए से प्रसंग में माननीय हाईकोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देते जो थे कि कर्मचारी माने से राइट को जानिबा दरकार जहाँद्वारा कि सेटा तांकर कामर मध्य आसीबो। तो आसन देखिबा आमे जेतोले गोटे मु जेतोले गोटे वीडियो बनाए सेतोले रेकॉर्ड जोटा जेन्युइन वीडियो सेटा बनाए जोटा सटीक कथा सबले मु कहे तो आपन देखि परथुबे। तो एटी गोटे लिखाई जे माननीय हाईकोर्ट को जो राय रे जे करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो आपण को जन्म तारीख इन सर्विस रिकॉर्ड जो सर्विस बुक रे जो सर्विस रिकॉर्ड रे कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। एटी केरला हाईकोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देइछथि जो थरे कि कहछथि जो आपण को जो सर्विस रिकॉर्ड रे जो डेट ऑफ बर्थ आपण को मेंशन अछि कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट जोटा कि करेक्शन पई आपण सेटा को अधिकार हिसाब रे ग्रहण करि परिबे नाही। The Kerala High Court has held that changing the date of birth in service record cannot be claimed as a matter of right। माननीय हाईकोर्ट कहते कि जो सर्विस रेकर्ड अच्छी ताकू चेंज करने आपण सेटा को दाबी करें ना जहाँकि गोटे मैटर ऑफ राइट नुहे। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अमित रावल जस्टिस ईश्वरन एस rely on various judgment of the Supreme Court and Kerala High Court to hold that the correction of date of birth in service record cannot be claimed as a matter of right। तो जो मान्यवर विचारपति दिजन थिले जो बेंच रे विचार चलतिला सेठी सेमाने जो रिलाय करथिले जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट मान्यवर सुप्रीम कोर्ट एवं केरला हाई कोर्ट को जो प्रीवियस जजमेंट को देखी आखि आगे रखी से तांको जजमेंट सुनैतिले कहते कि द सर्विस रिकॉर्ड कैनॉट बी क्लेम एज द मैटर ऑफ राइट। द इशू केम अप इन ए पिटिशन वेयर द यूनियन ऑफ इंडिया चैलेंज द डिसीजन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल allowing correction of precedent date of birth in service record observing that it would not cause any prejudice to the department। तार एटी कहला जो पिटिशनर वेयर द यूनियन ऑफ इंडिया चैलेंज द डिसीजन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो देइतिले allowing them correction करने रेस्पोंडेंट डेट ऑफ बर्थ जो सर्विस रिकॉर्ड रे ऑब्जर्विंग दैट वुड नॉट बी कॉज एनी प्रिजुडिस टू द डिपार्टमेंट जहाँकि डिपार्टमेंट को न्याय प्रदान न्याय हो पार ना। तो से कही द रेस्पोंडेंट एंटर इनटू सर्विस एज एन इंजीनियरिंग असिस्टेंट जे कि जड़े इंजीनियरिंग असिस्टेंट हिसाब से सरकारी चाकरी आरंभ करते जो 7/11/1999 मसीह एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट से जब नियुक्ति होते द डेट ऑफ बर्थ एंटर इन द सर्विस रिकॉर्ड वाज 1/6/1964 थिला। दिस वाज एज पर हिज SSLC बुक जो थिला से अनुसार सर्विस रिकॉर्ड बुक जो थिला बट लेटर 10/4/2007 द रेस्पोंडेंट क्लेम ही टू नो हिज एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज 2/7/1964 किंतु तांका रिकॉर्ड रे मेंटेन थिला 1/6/1964। He came to know his actual date of birth is 2/7/1964। He thereafter approached the state government for a correction of the date of birth in SSLC record which was accepted on 27/6/2007। Later as per the respondent the entries in his SSLC book were corrected as per the order date 13/1/2012। तो soon after that the respondent on 16/7/2013 gave a representation to the director of All India Radio जोटा कि it was rely on 5/8/2013 that said correction cannot be made। The reply stated that as per an official memorandum of the Department of Personnel and Training no request for correction in date of birth can be made after 5-year entry into the service। ताले जो आपण को सर्विस बुक रे जो रेकॉर्डटा एंटर हेइतबो 5 वर्ष परे ताकू आउ चेंज करा जाई पारिबो नाही। आपण जो डेट ऑफ बर्थ खो जे कोनोसी डाटा आपण सर्विस बुक रे रेकॉर्ड हेइतबो
पांच वर्ष पर आउ चेंज करा जाय परिबने। आफ्टर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इट वाज कन्फर्म बाय ए लेटर डेट 4/2/2015 रे गोटे लेटर कन्फर्म कराइला दैट द एप्लिकेशन फॉर करेक्शन वाज रिजेक्टेड। ताकर जो एप्लिकेशन थिला सेटा को रिजेक्ट कर दिया गला। ऑन 6/5/2015 द रेस्पोंडेंट वाज ऑर्डर टू रजिस्टर हिमसेल्फ इन द बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। To this, the respondent replied that his application for correction of date of birth in the service record is still pending. सी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रे जो तांकर रेकॉर्डटा रही कहते तो सी कहते कि तांकर जो पेंडिंग अच्छी जो डेट ऑफ बर्थटा जो तांकर करेक्शन होगा तो डेट ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट वे करेक्टेड। द रेस्पोंडेंट इन द मीन टाइम मेड ए रिक्वेस्ट थ्रू द मेकानिज्म provided for public grievance which was also rejected by an order 4/8/2022. Immediately after this order the applicant approached the central administrative tribunal. से applicant जेतिले पिटिशनर जेतिले से कैट रे अप्लाई करथिले जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ले। At the outset, the court observed that the tribunal should not have entertained the application as it was filed beyond the period of limitation given in section 21 of the Central Administrative Tribunal Act. ताको एटी कहला कि से जो फाइल करते केस फाइल करते जोटा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 21 अच्छी तार जो 5 वर्ष भितर जोटा आमर आउे करेक्शन कहया कथा से टाइम पूरा। द रेस्पोंडेंट इन हिज ओरिजिनल एप्लिकेशन हैड क्लेम दैट द पिटिशनर वाज फाइल्ड विथ इन द लिमिटेशन पीरियड by calculating the period of limitation from the order date 4/8/2022. High Court held that cause of action occurred on 4/2/2015 when the request for correction of date of birth was declined. The order on 4/8/2022 declined the respondent request to accept the Aadhaar card with the corrected date of birth for the purpose of registering himself in biometric attendance. This was not related to the correction of the date of birth in the service record. ताले एटी कोर्ट कहते कि ताकर केवल करेक्टेड जो आधार कार्ड थिला सेटा बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ग्रहण कराइथिला किंतु सर्विस रिकॉर्ड सेटा को करेक्शन ग्रहण करा जाई नथिला। द रेस्पोंडेंट हैड आर्ग्यूड दैट he had applied for correction of date of birth in 2007 and the order was passed only in 2012. He pleaded that he cannot be held responsible for this delay. से कहते पिटिशनर कहते कि ये जो डिले सी रेस्पॉन्सिबल नुह। हाईकोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ दिस पीरियड इज एक्सक्लूडेड द अथॉरिटी कुड नॉट हैव एंटरटेन्ड द रेस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट वाज बियॉन्ड द 5-year पीरियड मेंशन इन द ऑफिशियल मेमोरेंडम। जो ऑफिशियल मेमोरेंडम रे जो मेंशन थिला जोटा कि 5 वर्ष पीरियड भितर करेक्शन करा जिवा कथा किंतु से 5 वर्ष भितर कोनोसी करेक्शन करनथिले तेणु करी आउ करेक्शन करा जाय परिबो नाही। देन द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सेटल्ड लॉ is that the correction date of birth cannot be claimed as matter of right. कोर्ट कहते कि जो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा गोटे मैटर ऑफ राइट नो। द कोर्ट रिलाइड द स्टेट ऑफ यूपी एंड शिवनारायण उपाध्याय जो केस होता है दी जन भितर यूपी गवर्नमेंट सहित एवं शिवनारायण जो उपाध्याय जीतले व्हेयर इट वाज हेल्ड दैट द कोर्ट शुड नॉट डील विथ एन एप्लिकेशन फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डर फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ हैज ए चेन रिएक्शन अफेक्टिंग अदर बिलो हिम वेटिंग फॉर देयर प्रमोशन अदर देन दैट इट इज ऑल्सो ए बर्डन on the exchequer. The Kerala High Court in Ravindran versus State of Kerala had held that the government servant cannot apply for correction of date of birth beyond the stipulated period. तो ये कोर्ट कहते कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो अच्छा सरकारी चाकरिया से गोटे स्टिपुलेटेड पीरियड जो टाइम पीरियड जदि करेक्शन एक्सक्लूड करीगला माने टाइम पीरियड जदि चलीज तो तापर से आउ जो सर्विस रेकॉर्ड रे